Hey my love, so today I'm gonna show you a tutorial, full face of tutorial using all new products, all affordable new products. So yep, keep on watching. And आज मेरा bad hair day है, so I'm gonna make a quick slick bun. And yes, I'm breaking out a lot lately, like a lot. And acne marks are my best friend. I know yours too. So today I have a product जो मेरे साथ साथ आपके skin issues को भी solve करने में help करेगा. Introducing Vasu Facial Beauty Oil. It is a blend of 5 precious skin loving oils. The unique combination of kumkumadi, thylam, lavender oil, argan oil, grapeseed oil nourishes the skin and gives a gold like glow. ये आपके हाइपर पिगमेंटेशन को, एज स्पॉट्स को, रिंकल्स को, ब्लेमिशेस को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा. You can include this facial oil in your daily skincare routine and it is 100% natural, free from harmful chemicals and इसमें कोई भी artificial fragrance नहीं है. It makes my skin super glowy and healthy. I even use this before makeup to get that healthy dewy base. For best result, you can also try out their whole range where you will get a day cream, night cream, a sugar scrub and also an under eye cream. Well, I leave a link to this product in the description box below for you to check out. And now you can get an extra 10% off too if you use my coupon code, which is Sharmili10. So hurry up and check my description box for the link. So today I'll use Mars का new beauty blender and I received this in PR. And also ये छोटा सा mirror receiver जो कि बहुत ज़्यादा cute है. First I'm using a concealer. This is Faces Canada new concealer, high cover concealer and it's the affordable one. 2 concealer launch किया है Faces ने and it's the second affordable one. So ये ना थोड़ा सा light दिख रहा था website पे but मुझे थोड़ा ये yellow and थोड़ा dark receiver है but anyway I'm gonna use it to cover my uneven skin tone. And I'm using the beauty blender. The beauty blender works beautifully by the way. Like it absorbs less product but ये ना last punch जैसा उतना squishy नहीं है. Like it's थोड़ा सा hard and the concealer has a very nice healthy coverage and also ये काफ़ी अच्छे से blend हो गया beauty blender से. मैंने एक साइड पे यूज़ किया है beauty blender and दूसरी साइड पे मैंने यूज़ किया है Mars का concealer brush to try to check कि concealer में थोड़ा और ज़्यादा coverage मुझे मिल सकता है कि नहीं. But I didn't see any big difference. मुझे थोड़ा सा डिसेंट लगा मेरा लेफ्ट साइड का कवरेज राइट साइड से बट उतना कुछ ह्यूज डिफरेंस मुझे नजर नहीं आया. आई एम यूजिंग शुगर पॉप कॉम्पैक्ट एंड आई एम यूजिंग द सेम कंसीलर ब्रश टू अप्लाई इट इन द टैपिंग मोशन एंड ये कॉम्पैक्ट मुझे अच्छा लगा. इट्स लाइट वेट एंड कवरेज भी मुझे मीडियम लग रहा है, लाइक शेयर टू मीडियम कवरेज है. नेक्स्ट आई हैव NYB प्रो कंटूर एंड ब्रॉन्जर एंड दिस इज वेरी वेरी पाउडरी एंड टू पिगमेंटेड. लाइक यू हैव टू यूज इट वेरी केयरफुली बिकॉज इट्स गोइंग टू लुक पैची अगर आप ज़्यादा प्रोडक्ट अप्लाई कर लोगे एंड अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा उसके बाद. सो क्योंकि मैं सिर्फ पहली बार यूज़ कर रही थी सो मैं सजेस्ट करूँगी आप इसे थोड़ा सा लेके आपके हाथ के पीछे थोड़ा सा एक्सेस को टैप कर लो एंड देन जो भी बचेगा ना उसको लेके अप्लाई करो. अदरवाइज ये पैची लग सकता है एंड थोड़ा सा हार्श लग सकता है एंड जो मेरे साथ हुआ है. मैंने डिफरेंट ब्रश भी ट्राई किया बट इट डजंट वर्क फॉर मी. सो आई एम गोइंग टू ट्राई इट मोर बाय द वे दूसरे ब्रश के हेल्प से एंड आई एम गोइंग टू टेल यू मोर अबाउट दिस प्रोडक्ट. बट फॉर नाउ द कलर इज़ वेरी गुड मैच फॉर माई स्किन बट थोड़ा ब्लेंड करने में मुश्किल होता है. नेक्स्ट अप आई हैव दिस मार्स का ब्लशेस एंड दीज आर पाउडर ब्लशेस. Blushes are really beautiful. It blends beautifully. The pigmentation is quite good. You can build the coverage like as per your preference and it's not at all powdery. After that I have Mars का 2 new shade their glitter eyeshadow में से and oh my god I fell in love with the shades. मैं description box में shade name mention कर दूँगी. So first I'm going to use this shade on my eyelid, all over eyelid and that's why मैंने कुछ apply नहीं किया है मेरे eyelid पे concealer वगैरह. And look at the shade you guys, it's beautiful. I love Mars का liquid glitter वाला eyeshadows and these 2 shades are my current favorite you can say. Like I fell in love with these shades and look at the shine. It's really you guys, it's beautiful. Just you have to wait for a few seconds तब तक ये पूरा ड्राई हो जाएगा ना उसके बाद ये कहीं भी मूव नहीं करेगा. उसके पहले डोंट ब्लिंक एट ऑल
I'm just using here a brush to blend a little and look at the glitter effect. Next I'm using this shade, and I remember this shade because this is my favorite, and this is in the shade Nebula, and oh my god, it has a pinkish, silverish, purplish reflects, and I'm going to apply it on my inner corner, and I know I'm looking like a glow disco ball, and मैं बहुत जल्दी alien भी लगने वाली हूँ. Stay tuned for that, but I couldn't help guys, like I love this so much. So उसके बाद I'm going to use Sugar Pop का पेन लाइनर. At first I thought कि ये काफ़ी अच्छा पेन लाइनर है क्योंकि काफ़ी अच्छा ग्लाइड कर रहा था, and it's not too liquidy like the Swiss Beauty one, so ये बिगिनर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है. But then जब मैंने इसे थोड़ा सा और इंटेंसिफाई करने की कोशिश की, ये ना अपनी जगह से मूव कर रहा था. Like it feels like a dry gel liner. आप ब्रश से अप्लाई करते हो तो मूव हो जाता है ना ड्राई होने के बाद. It exactly like that. तो I didn't like the formula at all. Like ये ड्राई होने के बहुत तुरंत ड्राई हो जाता है, एंड ड्राई होने के बाद आप इसे रीअप्लाई नहीं कर सकते हो और ना ही इसे डार्क बना सकते हो, अदरवाइज ये कुछ ऐसा दिखेगा. नेक्स्ट अप आई हैव शुगर पॉप का आईब्रो पेंसिल इन द शेड चेस्टनट या वॉलनट. आई एम नॉट श्योर, बट या आई एम गोइंग टू यूज दिस एंड आई लव दिस टोटली. लाइक इट हैज़ अ सर्कुलर शेप वाला ब्राउ पेंसिल, इट्स नॉट एंगुलर, एंड जो कि काफ़ी प्रिसाइजली आप अपने ब्राउ शेप को मिमिक कर सकते हो एंड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो. द शेड इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर माई ब्रोज, एंड ऑल्सो इट हैज़ अ परफेक्ट वैक्सीनेस, सो आई लव दिस रियली. आई हैव मार्स का न्यू काजल, एंड फर्स्ट वन इज गोल्डन, सेकेंड one is white. I'm going to use a white one, and you can see how beautifully it glides. That one's white pigmentation is opaque. I actually didn't expect it to be this pigmented, otherwise मैं थोड़ा कम अप्लाई करती. Next up I have Sugar Pop का mascara volumizing one. The wand is pretty unique. It is like almost like looks like a क्रिसमस ट्री, बट एक्चुअली इट हैज़ अ रीज़न. जो आपके इनर पार्ट होते हैं ना आईलैश का, वो काफ़ी छोटा होता है, तो उसमें ना काफ़ी मेस हो जाता है अप्लाई करना, एंड इस वॉन्ड की हेल्प से ना आप वो मेस अवॉइड कर सकते हो, एंड ये अच्छी तरीके से आपको लैश को कोट करता है एंड ऑल्सो वॉल्यूम भी प्रोवाइड करता है. सो आई लव इट अगैन. एट दिस मोमेंट आई थॉट थोड़ा सा लुक को ठीक किया जाए, सो मैंने थोड़ा सा वाइट लाइनर को काजल को लेके मेरे आउटर लाइन पे अप्लाई किया है, एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल. उसके बाद आई हैव एनवाईबी का शिमर ड्रॉप्स, एंड ये मैंने सबसे पहले ना डायरेक्टली अप्लाई किया मेरे फेस पे एंड ट्राई टू ब्लेंड इट, बट इट डिडंट वर्क. सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा सा अपने हाथ पे ले लो, एंड देन आप इसे अपने ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से पिक करो एंड देन अप्लाई करो. उससे ना आपका जो ब्लेंडिंग है वो काफ़ी ईजी होगा, अदरवाइज जो ये हाईलाइटर है ना वो काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है. सो या दैट्स माई सजेशन, एंड द शेड इज़ ब्यूटिफुल बाय द वे, एंड ऑल्सो द इफेक्ट इज़ ब्यूटिफुल. इट हैज़ नो हार्श पार्टिकल्स. थोड़ा सा बैम इफेक्ट है बट उतना भी हार्श नहीं है. सो या आई लव्ड इट अगैन. उसके बाद आई हैव शुगर पॉप का लिक्विड लिपस्टिक्स. आई एम गोइंग टू यूज अ शेड मेहगोनी, जो फर्स्ट वाला शेड है, एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल ब्राउन टोन मरून शेड. इट फेल्ट रियली सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड कंफर्टेबल. लाइक ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं लगा. द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी स्मूथ. सो उसके ऊपर से आई थॉट लेट्स ग्लॉस इट अप एंड लेट्स लुक लाइक एन एलियन मोर. सो मैं यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का न्यू ग्लिप ग्लॉस इन द शेड 02, एंड ये ना थोड़ा ज़्यादा शाइनी है, मतलब ग्लॉसियर नहीं है बट शाइनियर है. सो दैट्स ओके. अगर आपको ज़्यादा ग्लॉसी नहीं पसंद है, यू कैन यूज़ दिस. एंड दिस इज़ द फाइनल फिनिश्ड लुक. मैंने सोचा थोड़ा सा हेयर ओपन करके देखते हैं अगर थोड़ा अच्छी लग सकती हूँ मैं तो, बट या दैट्स द फाइनल लुक. अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट्स की, सो पेन लाइनर को छोड़ के एंड ऑल्सो जो इनोवे का ब्रॉन्जर है उसको छोड़ के बाकी सब प्रोडक्ट्स में बहुत पसंद आया मुझे, एंड आई लीव अ लिंक. सो या आई होप यू गाइज एंजॉयड इट. आई विल सी यू गाइज अगेन. टिल देन बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल.